लेह लद्दाख कोई बच्चों का खेल नहीं है। बट व्हाट इफ आई विल से बच्चों के साथ लेह लद्दाख। Everyone, this is Anika from Nomad Mom Son. I usually travel solo with my son और लद्दाख भी मैंने अकेले किया था अपने 5 साल के बेटे के साथ। So जब से ये हुआ था तब से the biggest question asked every time on my Instagram, Facebook and as well on the YouTube is how did you manage all the things? So before heading to my next journey along with my son, I thought today is the right time to answer all of your question. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 things के ऊपर: how to reach to the Ladakh, the itinerary, things you need to carry while you are traveling to Ladakh with your kid, do's and don't as per my own experience. So शुरू करते हैं. Before going to start, don't forget to subscribe the channel and follow us on the Instagram for the kids traveling tips and tricks as well our travel update. It's motivate me further to create more and more videos like this. So do check out us on the Instagram and subscribe here as well. First question is how to reach to the Leh. Leh is the capital of the Ladakh region जो directly connected है flight से. So first way is to go by flight. The second way is only by the road. और यहीं से सबसे ज़्यादा confusion आती है कि whether we need to go from Srinagar to Leh or from Manali to Leh. दोनों रास्तों का अपना ही अलग चार्म है, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ हैं तो I will suggest you do it from Srinagar to Leh. दो मैंने मनाली से ले किया था, but I know what the issues I face on that route. From yesterday night I am feeling dizziness and everything. So I took the oxygen, but still no help. Still headache is still there. So first we'll go to army camp, check out everyone condition, and then we'll move further. And I am glad that was with me, not with my kid. Otherwise it would be more worse. It would be more worse for any parents. So take my suggestion, do it from Srinagar to Leh. बच्चे के साथ हैं तो थोड़ा धीरे धीरे अकमडाइज करते हुए हम हाइट गेन करेंगे. कमिंग टू द आइटनरी ऑफ लेह लद्दाख. लद्दाख के लिए जाते हैं 2 रास्ते. एक आप कश्मीर से लेंगे कारगिल होते हुए, ये आता है लेह. सेकंड इज फ्रॉम मनाली. कश्मीर से कारगिल होते हुए ले आने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑल द टूरिस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोकल ले कम ऑन दैट हाईवे इटसेल्फ. तो आप वो आते आते भी कवर कर सकते हैं. वंस यू रीच टू द ले, इसके बाद हम खारदुला होते हुए जाते हैं नुब्रा. नुब्रा से अगर आपको टुकटुक जाना हो तो इधर यू गो एंड स्टे फॉर 1 नाइट और यू कैन कम बैक सेम डे टू द नुब्रा और हुंडर. हुंडर से शोक वैली होते हुए हम जाते हैं पैंगोंग. पैंगोंग से चांगला पास होते हुए हम आते हैं वापस लेह में. दिस इज द पॉपुलर टूरिस्ट ट्रायंगल. इसके साथ साथ इफ टाइम परमिट यू कैन गो टू सोमोरी लेक, हानले. फॉर दोस यू नीड एक्स्ट्रा 2-3 days एटलीस्ट. सो इस टूरिस्ट फेमस ट्रायंगल को कवर करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 nights इन द लेह. Either you come by road or you come by air. It is always suggested to take rest before heading towards other higher point Nubra and Pangong. इसको बोलते हैं acclimatization. आप इसको जितना अच्छा करेंगे, जितने दिनों के लिए करेंगे, उतना आपके लिए आगे का ट्रिप enjoyable रहेगा. People take it very lightly, but this is not the case. So after 2 nights in Leh, you need 1 more night in Nubra, 1 night at Pangong, again 1 more night in Leh when you come back from Pangong to Leh. 5 nights and 6 days you need to be in Leh Ladakh at least. From itinerary, let's move to the things you need to carry. So इसको again हम divide करेंगे 3 things में. One is for the clothing, one is toiletry and one is your medicines. In the clothing, make sure you carry the t-shirt with the full sleeves. इससे 2 फायदे होंगे. It will avoid the sun tanning, sunburn. Second, if there is more winter, these full sleeves cotton t-shirt will work as vest for your kid. इसके साथ साथ 2-3 fleece jacket if you feel cold, or take 1 or 2 down and heavy jacket for your kid.
take the woolen cap, 1 or 2 pair of the woolen socks. I know many of the places you might not need them, but if you are crossing any high passes like Khardungla or Changla, there you definitely need this. Shoes, prefer if you have high neck shoes for your kid. ये थोड़ा पैर वैर ट्विस्ट होने की कंडीशन में हमको एंकल सपोर्ट देते हैं, so prefer those if you have. Otherwise sports shoes are good enough. Do carry the sunglasses because sun is extreme sharp there, and at many times you will feel your eyes are watering. Talk about the toiletry. Apart from the basic toiletry, 2 main things you need to carry. One is the sunscreen. Make sure उसका SPF at least 50 हो. Second is the almond oil or the apricot oil. इस oil का आपको क्या करना है? Before going to sleep, just drop 2-3 drops in both the nostril of the kids. Because Ladakh air is so cool and dry, it can tear the tissues inside. Do remember the irritation in the nose and the blood clotting inside the nose is quite common in Ladakh. Oil will help to retain the moisture inside your nose. Now coming to the medicine. Apart from the basic medicine, do carry the all basic medicine, whether it is headache, cold, stomach ache or anything, or any prescribed medicine for your kid. Don't forget any of the medicine because the medical facility is very far away in remote areas of Ladakh. Do carry the motion sickness medicine क्योंकि mountain के curvy road make them dizzy, and इसके साथ साथ carry the oxygen can and believe me, carry it. एक जोड़ी कपड़े कम रख लेना, बट इसको ले लेना, जरूरत पड़ने पर स्टाइल नहीं यही काम आएगा. तो यू कैन टेक दिस फ्रॉम द ले मार्केट. इसके साथ साथ डायमॉक्स. अभी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, डायमॉक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. आई विल सजेस्ट डोंट टेक इट अंटिल इट इज prescribed by your doctor. It is not like paracetamol. और बच्चों को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? No, never ever give it to the kids. Now let me introduce you 2 of the magical things. Don't forget to carry them. One is this garlic and another is just hear this one. लग रहा है तो ये लगा रहा हूँ. ये है कैम्फर. कैम्फर है तो इसको स्मेल करना पड़ता है. तो अगर आप ले जा रहे हैं तो कैरी this. So yes, I am talking about the garlic and the camphor. When you feel headache, dizziness, you can give the garlic water to your kid. अगर वो नहीं लेते हैं, just simply give the camphor to sniff. It create a sensation in the brain जो headache को और AMS को avoid करती है. Same is with the camphor. In the food, carry the protein bar, nuts, laddu and other homemade food items along with you. Just make sure कोई भी snacks ना ज़्यादा sweet हो ना ही ज़्यादा oily हो, क्योंकि sweet trigger करता है mood swing in the kids और oily make them dizzy on the curvy road. So keep a balance of this. Always make sure your car or taxi have enough of drinking water and the snacks. To the third point, the do's and don't. First thing is acclimatize. Always listen to any travel agent or any experienced guide. Stay at least for 2 nights in the lake. आपको higher एल्टीट्यूड में आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है. इसके साथ साथ बिफोर स्टार्टिंग फॉर एनी ट्रैवल एनी ड्राइव गिव द मोशन सिकनेस टू योर किड. इससे उनको डिजीनेस कम होगा एंड वॉमिटिंग वगैरह की चांसेस बहुत कम होंगे. थर्ड पॉइंट इज दैट चेक इफ दे आर ड्रिंकिंग इनफ ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में भी होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच हेल्प अस टू फाइट विद द AMS. एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर मेक श्योर दे ड्रिंक इन अ डे. नॉट ओनली इन द किड, जिसको भी डिजीनेस और वॉमिटिंग का इश्यू होता है, मेक श्योर दे सिट इन द फ्रंट सीट. आप बच्चे को फ्रंट सीट पे सीट बेल्ट लगा के बिठा सकते हैं इफ़ योर चाइल्ड इज ओल्ड इनफ. अदरवाइज अगर बच्चा छोटा है तो उसको कार सीट में ही रखिए. नेक्स्ट थिंग इज दैट कवर देयर हेड व्हाइल यू आर ऑन एनी हाई एल्टीट्यूड पास. दीज 5-10 मिनट्स आर क्रूशियल इनफ टू कॉज AMS. सो इसको कभी लाइटली ना लें. उनका हेड और ईयर हमेशा कवर रखें हाई पासिंग एंड आफ्टर सनसेट एज वेल. How do you know a kid has ALS? First, they get cranky like I was in Khardungla, and second, they talk a lot like me in Changla. If they have headache and lot of vomiting, their behavior is very irritating. अगर ये सारे इशू बच्चे के साथ हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट पैनिक.
This is okay. Sometimes it happens with the adults too. In all the cases, come down at the lower altitude. You give them enough water to drink. Keep checking their urine color. If it's yellow, give them more water to drink. In entire Ladakh, you keep the activity level low. After reaching to low altitude area, give them garlic water. अगर garlic water के लिए वो मना कर रहे हैं, give them any soup or any liquid diet only. As well, the camphor to smell. अगर आपके पास ऑक्सीजन कैन है तो आप वो भी दे सकते हैं. और अगर ट्रबल ज़्यादा है तो go to the nearest army station. How you can avoid the AMS issue? First 2-3 things like I have mentioned already. आपको अच्छे से एक्लिमेटाइज होना है ले में. सेकंड, आपको और बच्चों को इनफ ऑफ वाटर ड्रिंक करना है. और थर्ड, ऑलवेज मेक श्योर आपकी आइटनरी में रेस्ट टाइम भी हो. द ट्रैवल इज़ नॉट ओनली अबाउट टू चेक एनी प्लेसेस बट देयर शुड बी enough of time for enjoyment and relax as well. So make sure you don't do any hurry, especially when you are in Ladakh. Last not the least, be like a responsible travel and check a count on your carbon footprint. I'm sure as a parents you want to save this reason for your future and for your kids as well. Before ending this video, I want to thank one person. So generally I don't believe in planning and going with the travel agency or anything for my trip, but since at this high altitude I'm with my son, so I don't want to take the risk. So I am with Kunjang, who is planning all my trip for the Leh. He is like a friend of the friend, so he's very trustworthy, and I will give his contact detail in my description. So if you are planning to the Leh, please contact Kunjang. He is very experienced here. He made sure that our stay is comfortable and made our itinerary as per our comfort. All his details are mentioned in the description down, so do check out with him. I hope I have covered all the points. Still, if I have left with any, you can let me know in the comment. I will happy to help you, or you can follow me on the Instagram for all the travel tips and tricks. I wish you a very good time in Ladakh. Happy traveling and stay tuned for more. Bye bye.